Well, so let us start the interview. Please introduce yourself first. Yes, sir. Sir, my name is Yogesh and I am from Ujjain, a district in Madhya Pradesh. From Ujjain itself, I have completed my schooling. Later, I pursued my engineering in electronics and telecommunication from Devi Ahilya Vishwavidyalaya in Indore, Madhya Pradesh. I have worked in Life Insurance Corporation of India for more than 2 years, and at present I am working in Food Corporation of India as an assistant in depot. My interest involved playing chess. Thank Okay. you. So you're currently working with FCI. Yes, sir. Well, so Yogesh, are you aware of any changes that were proposed in the Essential Commodities Act, which was a part of the 3 set of laws that the government was trying to implement? Yes, sir. Government has government has removed a certain vegetable and certain commodities from it, like potato and or I can remember. No. Are you aware of certain limits under the Essential Commodities Act that were, done away with? Sorry, sir, I am not aware. Okay. You like to play chess? Yes, sir, I like to play chess. Okay. Tell me your signature move. Signature move is my first move from the pawn to two-step pawn in the first for initially. Okay. So can you tell who has been the latest Grandmaster in India? Latest Grandmaster in India, sir, at present I am not able to recall, sir. Okay. So you are an engineer in electronic and telecommunication. Yes, sir. Don't you think you have wasted 4 years, because now you're preparing for government services? Your engineering knowledge shall go completely waste now. Do you agree? No, sir. No, sir. I can say in engineering also I have learned something. I have improved my personality. I have gained knowledge, and I have implemented also it in my engineering. I have learned some things, and I have done mistakes. I have learned from that mistake also that I will. So I can say that Okay. it will help. Tell me 3 soft skills that you have learned in engineering that you think will help you in a job in EPFO. Sir, so I can say, sir, I have organized events during engineering, and also I have interacted with many new students during my college. Also, sir, I can say I am, because of my engineering background, I am technically sound. Okay. So you have worked in LIC as well. Yes, 2 sir, years. I have worked in everything. LIC Yes, sir, runs insurance schemes. You are Yes, aware that EPFO also runs an insurance scheme? Sir, I am not aware about the insurance scheme. Have you heard of the Yes, EDLI sir. scheme? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Employee. It Please is one tell, of the. Yes, sir. please tell 3 salient features, the prominent ones of EDLI scheme. Yes, sir. It provides life insurance to its subscriber, and the government has recently increased the that benefit from 6 lakhs to 7 lakhs, and also those who are covered under the EPF Act will get the benefit of this EDLIS scheme. So what is the precondition for this EDLI scheme? So those who have salary less than 15,000, they who are covered under the EPF Act will ultimately get the benefits of this scheme, EPS. So EDLIS scheme. Okay.
So, Yogesh, what are the qualities that you think an enforcement officer should have while working on the field? Sir, I think so. Enforcement officer should act as a facilitator between the employer and employee. He should pay more. He should try to give attention towards the problems of the employee. Try to solve grievances of the No. employee. You are not precisely answering my question. My question is, what are the key traits, personality traits that should be there in an enforcement officer who's working on the field? He should have knowledge about the Okay, knowledge is one. of labor laws, about the current What labor else? laws. He should be empathetic toward the needs of the employer and employee, Very good. What else? and he should take his decision on the as per the circular and the rules and regulation given in that. Okay, fine. Do you think you have all these qualities? Yes, sir. I think I have. Can you tell some examples to show that you have empathy in you? Your real life Sir, examples. yes, sir. Sir, in Life Insurance Corporation, I was posted in a semi-rural area where the public who generally comes to the office, they are illiterate and they don't know even a single thing about the procedure. And also, sir, as a in LIC, also LIC is a government sector, so there is stable culture in LIC. So everyone used to, मतलब सब जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको बोलते हैं उस टेबल पे चले जाओ, उस टेबल पे चले जाओ. तो मैं हमेशा ये ट्राई करता था कि जो वो पब्लिक है, जो बेचारा वो जो कस्टमर है हमारे, उनका सब काम एक ही टेबल पर हो जाए. तो मैं उनको जितनी भी सर्विसेज है मोर इफेक्टिवली और इफिशिएंटली उसी टेबल पे देने की कोशिश करता था. ठीक है, Yogesh, but don't you think this should be done systematically? Because if there is no systemic change, you helping people like that won't solve the issue. Suppose you will be able to help 10 people in a day by solving all their problems on one table. What about rest, all of them? Sir, in this, there were suggestions from the zonal office that you should there was a competition that you should suggest changes in the working of the LIC. What should so I have suggested some. I have give some suggestions to the zonal office, and I Okay, also very want good. prize in that. Yes. Okay, very good, Yogesh. So, Yogesh, you are aware that the government has recently launched IPO for LIC. Yes, sir. Right? I am. Totally Do you think the government has the right to do the same with EPFO? Can it launch LIC of IPO? Oh, sorry, LIC IPO of EPFO for that matter. Sir, government can surely do it, but EPFO caters, actually LIC policies are mostly voluntary. It depends on individual whether he wants to take it or not. But EPFO caters to the society at a caters to the needs of the lower strata of the society. So, and we know that for a company, the its main intention is to get a means profit oriented. Its main motive is profit oriented. So I don't think it is a wise move to privatize or IPO लाना चाहिए सर EPFO का. Okay. So you are aware that the share price of LIC is falling down? Yes, sir. Yes, sir. I know it. Okay, you have invested in it? Yes, sir. I have invested in it. But I have sold it on the first day only. So you must have incurred losses. No, sir. On the first day, I have sold it. Okay, you have sold it for profit.
Okay, fine. Yes, sir. Now, Yogesh, tell me, how do you see Yes, sir. why the share prices are falling, first of all, and how do you see the future of the share price going? Sir, if we compare it to the other companies like HDFC and SBI, if you see the net size of asset size of LIC, it is 40 lakh crore. And if you see market capitalization of LIC, it is 4 lakh crore. And if you see the profit, net profit generated by LIC, it is only 4,000 crore. Means a company with market capitalization of 4 lakh crore should have profit of around 20,000. Like HDFC Life Insurance, they have profit of around 1,200. Means I want to give an example. LIC 1000 पॉलिसी सेल करती है और वो 100 रुपए कमाती है, और HDFC 200 पॉलिसी बेचती है. So, I mean, I have not got the conclusion. Please be brief and tell that. Do you think that the share prices are going to go up in future anytime? Sir, I don't think so, because Okay. if you see the means Well, PE Yogesh, ratio. that answers my question now. So those were my questions. Now, Kushagar sir will continue the interview. Hi Yogesh, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So Yogesh, you have done your graduation in electronics and telecommunication. Yes, sir. I heard that. Like, what was your favorite subject in electronics and telecommunication? Sir, it was basic electronics. Basic electronics. What was in it that appealed you? It introduces a subject. It gives an overview of the subject of what about the electronic telecommunication is. It gives a overview of the electronic devices or the phenomenon on which it works. All the electronic devices work. Okay, and regarding telecommunication, ADC, in telecommunication sector, any particular subject of interest in telecom? In telecom, yes, sir. At present, sir, it has been 5 years. So, sir, at present, I am not able to recall it, but there are many satellite communication was there as a subject. Okay, fine. So then you did a certificate course in the principle of insurance. Yes, okay, sir. Sorry, a course in principle of insurance. Yes, sir. Right. So can you tell me what is the difference between indemnity and insurance? Insurance is a cooperative agreement which used to transfer personal risk to a group, to a pool of risk, to a pool of persons. And indemnity means whenever a company pays you the loss, जब भी कंपनी तुमको पूरा पे कर देती है लॉस, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर होता है जिसका इंश्योरेंस किया होता है, वो उसके ओनरशिप राइट कंपनी को ट्रांसफर हो जाते हैं. You mean to say that जो इंश्योरिंग कंपनी है, यस सर, तो वो तो परचेज हो गया इंडेमनिटी. आर यू श्योर? यू मीन टू से कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी इंडेमनिफिकेशन अगर हो रखा है, एक्सीडेंट होता है किसी बिल्डिंग का, फायर इंसिडेंट होता है, तो जिस एस्टैब्लिशमेंट ने, जिस कंपनी ने इंडेमनिफिकेशन कर रखा है, वो पे करेगी और सारे राइट्स उसके हो जाएंगे इंडेमनिफिकेशन करने वाली कंपनी के. तो वो तो परचेज हो गया ना, उसने तो पे करके परचेज कर लिया, आप ये कह रहे हो. तो कोई इंडेमनिफिकेशन I am not able to recall it, sorry. अच्छा, what was the purpose of this course? कि आपने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस किया था जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से,
तो Sir. क्या रीजन था आपने Sir, it will help me to get promotion in the LIC. Also, I will get the knowledge of subject matter of insurance. That's why I अच्छा, do have you done. think that was helpful? Do you think this course was helpful? Yes, कुछ आपने sir. learn Yes, किया? sir. When I have given the exam, I have read a whole theory about the insurance, and that helped me a lot because I was not knowing about the terms. I used so that helped me a lot to know the terms related to insurance. Okay. Various So terms. देवी अहिल्या बाई के बारे में आप क्या कुछ सेंटेंस कुछ Yes, मुझे sir. बताइए ब्रीफली. Sir, she was social activist. Social activist. She was a religious lady. She was a daughter-in-law of Malhar Rao Holkar, which was one of the chieftain of Baji Rao, Peshwa Baji Rao, and he ruled for 30. She ruled for 30 years over the Malwa region, and also he had done. योगेश, आप EPFO क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? First of all, I would say, sir, at present, I think my job is limited to only maintaining records and punching data into the computer. So I think so. EPFO will provide me an opportunity to work in diverse domains, like such as managerial and administrative capacity. Also, I will get an opportunity to work for the lower strata of the organization. Also, sir, I think so. I will get. अगर आपको आपके यहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं FCI में? No, sir. असिस्टेंट पोस्ट पे है? Yes, sir. Yes, sir. तो डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है? Yes, sir. अच्छा, तो अगर हाँ, yes, sir. EPFO ज्वाइन करने के बाद आपको कोई और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसके लिए जाएंगे? Sir, I have not prepared any for other exams. So it is the best opportunity I have ever got in my life. So at present I am not preparing. But if I got another opportunity to work better for the society and for the government, I will surely go for it. अच्छा, एज एन अकाउंट्स ऑफिसर आप सोसाइटी के लिए कैसे और गवर्नमेंट के लिए कैसे अच्छा करेंगे? EPFO में एज एन अकाउंट्स ऑफिसर. Yes, sir. I will ensure that to the employer and employee to provide a conducive environment for the employer and employee as well. And अकाउंट ऑफिसर के तौर पे सर मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जो प्रॉपर आई विल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स लाइक रजिस्टर्स. पर रिकॉर्ड्स कीपिंग तो आपको अपनी करंट जॉब में भी पसंद नहीं है? नो सर, ये नहीं बोला मैंने सर. एक्चुअली मैं अभी लिमिटेड सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेनिंग पे ही है, लेकिन EPFO में मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिधर मैं अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पाऊंगा. ओके, तो EPFO में अकाउंट्स ऑफिसर का काम रिकॉर्ड कीपिंग भी है क्या? उसके मैंडेट में होता है? आप ड्यूटीज ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर में रिकॉर्ड कीपिंग भी है? Sir, yes, sir. As an account officer, he has to maintain proper reports and records, registers, and he has a duty to periodically scrutinize them. Also, he prepares defaulter list and annual statement of the accounts of the employees. Also, sir, he play an important role in claim settlement. Okay. As an account officer. Thank you, Yogesh. That was all from my side. Thank you, sir. Doctor, I'll pass on to Dr. Dhananjay. Yeah, Yogesh. Yes, sir. Can you see me and hear me? Yes, sir. Yeah. So when is your interview? Sir, it is on 20th July. 20th July. So you have 12 days now. Yes, sir.
See, a couple of things. Yes, sir. First of all, once you have started in English and you want to switch to Hindi, you always have to take permission. Yes, sir. Without that, you don't have to do it. You just naturally switch without asking, and then again switch back to English. So if English is the medium of interview, continue it in English. Or else, if you are more Okay. comfortable in Hindi, go for Hindi as the medium. Yes. Right? So Yes, this sir. was the first thing that I noted. Second is the precision part. You're speaking very long answers. Okay. You're understanding it. You have to Okay. somehow give a thought of a second and then paraphrase your answer in a manner that you end your answer in 3 seconds, 3 sentences, not more than 3. Okay. Okay, sir. Right. So what happens is you're giving very elaborate replies. It's not an answer writing session, mind you. It's the interview wherein only 15 minutes is what the panel is having, and in those 15 minutes, we wish that a lot of aspects of your persona are explored. Yes, sir. If you keep giving one single reply in 1 minute or so, see the amount of questions. Only 14, 15 questions can be asked in 15 minutes. So you have to finish your answer in 30 seconds and not use more than 3-4 sentences. Okay, sir. Right. So this was the second aspect, and beyond that, a couple of things. You read about your job aspects, about that Essential Commodities Act amendment I asked. You're in FCI, so the government Yes, sir. had done away with the limit, because of the black marketing and hoarding this, there were limits to what one can store. So brush your knowledge up because you have time. That is what we are discussing right now. About Sir. chess as well, you started telling you started on a good note, but somehow you couldn't tell the grandmasters, which is very basic question when Yes, it sir. comes to chess and all. Yes, sir. So Recent grandmaster. yeah, so it reflects that you have not prepared your hobbies well. Right. So what you should do is you should see the keywords, try to frame 4-5 questions from each and every keyword from your DAF and prepare them. Yes, sir. And stand in front of a mirror, ask the question, try to record it, and set a stopwatch. Try to finish it in 30 seconds. Right. And you can rehearse this, and you can come for an offline mock as well, because we are not able to see the posture, the facial expressions, etc. very clearly in online mock. Yes, sir. Yes, sir. Right. So you can choose a date for an offline mock as well, wherever you feel comfortable. Right. Yes, sir. So these are my suggestions to you. Anything you want to ask? यस सर एक्चुअल में सर होता ये है कि अभी मेरा जो भी सब्जेक्ट्स है ना मैं अपने इंग्लिश में प्रिपेयर करता हूँ लेकिन मेरा फ्लो अभी इंग्लिश में इतना नहीं है तो फिर मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में ज़्यादा मतलब कुछ सेंटेंस हिंदी में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो इस कारण मैं हिंदी में स्विच करता हूँ तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए मीडियम बहुत ज्यादा आप इसके लिए जज नहीं किया जाएगा आपको। अगर आप हिंदी में देंगे तो उसका कोई बहुत गहरा प्रभाव नहीं होगा कि आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो वो कंफर्ट और वो मेंटल रिलैक्सेशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जो आप इंग्लिश में थोड़ा अगर अनकंफर्टेबल होके कुछ का कुछ कन्वे हो जाए या अच्छे से कन्वे ना हो पाए, वो ज्यादा रिस्की है। तो आप चाहें तो हिंदी को मीडियम बना सकते हैं सर, लेकिन मैंने अपना जो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं वो सारे आंसर जितने भी प्रिपेयर करे हैं कोई इशू नहीं, और जितना भी मटेरियल पढ़ा है वो सब इंग्लिश में। तो हिंदी में नहीं, बोलूंगा आप तो फिर सर मैं कोई इशू नहीं। आप क्या कर सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स जो है वो इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, बाकी आप हिंदी यूज कर सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, ओके। हाँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप अपना सर मीडियम इंटरव्यू हिंदी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर 10-12 दिन पहले अपना सर मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर मीडियम चेंज करने में? नहीं, मीडियम चेंज कर रहे हो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो इंग्लिश से। इवन आफ्टर स्टडिंग इन इंग्लिश फॉर वेरी सो मेनी लॉन्ग इयर्स, आप डेली अपने घर वालों से, दोस्तों से हिंदी में बात करते हो, तो हिंदी में अगर आपका अच्छा कंफर्ट है तो आप सिर्फ टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में यूज करके यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ बेटर इन हिंदी, तो गो फॉर इट।
क्योंकि आपको बीच में स्विच करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दो। उसके अलावा एक और सलाह ये रहेगी कि जैसे इंटरव्यूअर बोलना शुरू करता है, बिल्कुल सडन ब्रेक लगा दो अपनी वाणी को। आप चाहे कोई भी क्रूशियल सेंटेंस बोल रहे हो या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपने आंसर का, तो भी बिल्कुल रोक दो अपने आंसर को और इंटरव्यूअर को अपनी बात कहने दो, क्योंकि दैट शोज रिस्पेक्ट। वो लोग दे आर वेरी सीनियर पीपल, 60-70 साल की उनकी उम्र है, 30-40 साल का अनुभव है उनका सरकारी नौकरी का। तो रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना उनकी, तो दैट विल ऑलवेज लीड टू गुड इंप्रेशन एंड मार्क्स। ठीक है, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। योगेश, एक चीज वही मुझे थोड़ा सा आपके इंटरव्यू में लगी कि आपने डेट क्या बताई थी आपके इंटरव्यू की? 20 जुलाई। 20 जुलाई। तो ठीक है, अभी आपके पास अराउंड 13 डेज हैं, 12-13 डेज हैं। आप थोड़ा सा आप अभी ऐसा लगा कि आप टाइम कम दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन पे, थोड़ा सा और इस पे अपने आप पॉलिश करिए। आप आपने ये जो रिटन एग्जाम क्लियर किया है, वेरी फ्यू पीपल हैव बीन एबल टू डू दैट, तो यू आर अमंग दो सिलेक्टेड फ्यू पीपल। तो अभी आप कई चीजों में आपका आंसर जो था वो पॉलिश नहीं था, प्रिसाइज रखिए अपने आंसर को। इंपॉर्टेंट 3 सेंटेंसेस में आप उसको अपना फ्रेम करके आंसर बोलिए। भले आपको टाइम पहले इनिशियली आंसर करने से पहले थोड़ा सा टाइम चाहिए कि सर आई वुड लाइक अ मोमेंट टू रिकलेक्ट माय थॉट्स या टू फ्रेम माय आंसर, आप वो भी बोल सकते हो। और हिंदी इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता है, पर ये स्विचिंग मैटर करती है कि आप इंग्लिश में बोलते बोलते हिंदी शुरू कर देंगे या हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश, तो वो क्लियरली दिखती है। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें बोलिए, हिंदी में कंफर्टेबल है आप हिंदी में बोलिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक तो थोड़ा सा कुछ आंसर्स में ऐसा लगा आपकी अप्रोच थोड़ी सी कैजुअल थी, वो नहीं दिखनी चाहिए। आप और कुछ चीजें अगर जैसे आपके प्रोफेशन से या जैसे अब इंडेमनिटी वगैरह अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आप गलत या कुछ भी ऐसे आंसर देने से बढ़िया आप मना कर सकते हो कि ठीक है सर, आपने कोशिश करनी है आपको, आपने क्योंकि ये टर्म पढ़ा हुआ है, आपने सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी किया हुआ है पढ़ा हुआ है, यू आर फेमिलियर, बट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो पोलाइटली डिनाई कर दो, सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट मीनिंग, या नहीं कर पा रहे हो। तो ब्लफ करने की या फिर कुछ उनको ऐसे ये मत सोचो कि जैसे वाइवा में गोली दे दी, ऐसा नहीं होता है। तो वो काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, आपको वैसे नहीं करना है। और जो भी चीज है, जैसे अहिल्या बाई के बारे में पूछा, आप 3 सेंटेंसेस में मतलब ट्राई करिए, हो सकता है कि वो 3 सेंटेंसेस के बाद भी चुप रहे, एक्सपेक्ट करें, तो बट जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेंटेंसेस इनिशियली आने चाहिए, इधर उधर की बातें बाद में। जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेंटेंसेस हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट, जो सबसे कन्विंसिंग आपकी 3 लाइंस हो वो बोल दो। उसके बाद उनको पूछना होगा तो और पूछेंगे, वेट करेंगे, अदरवाइज वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ही शुरू कर देंगे। आपके आंसर्स छोटे होने चाहिए थोड़े से। तो बस बाकी जो आपकी स्ट्रीम है, थोड़ा सा जो मैंने जैसे सर ने भी बताया कि थोड़ी सी अप्रोच आपकी अभी ऐसी है कि थोड़ा पॉलिशिंग की जरूरत है, तो अगर आप ऑफलाइन अटेंड करें तो ऑफलाइन आप ट्राई करें। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, मैं समझ गया, मैं ट्राई करूंगा सर कि अभी तो मैं सर एक बार हिंदी में ट्राई करके देखता हूँ कि मैं हिंदी में देख सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, एंड देखता हूँ सर। मेरे को एक्चुअल में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, बस मैंने अभी उसका रिवीजन नहीं करा। जैसे आपने इंडेमनिटी पूछा है तो उसका बस मेरे को अभी रिवीजन करना है। कोई बात नहीं, दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आपको नहीं पता हो, कॉन्फिडेंटली पोलाइटली मना कर दीजिए। कई बार होगा ऐसा कि आपको चीजें शायद ना पता हो, फैक्ट्स ना पता हो, या फिर पर ओपिनियन बेस्ड में आपको ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे नहीं पता। ओपिनियन पूछा जा रहा है तो सोच के अपना ओपिनियन, एक पॉलिश्ड ओपिनियन लाइक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो होती, एक प्रॉपर ओपिनियन आप उनको फ्रेम करके दें। फैक्ट बेस्ड में आपको नहीं पता हो, ट्राई करें, अगर आपने पढ़ा हुआ ट्राई करें। आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको पोलाइटली बोल दें कि सॉरी आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट इट, आई एम अनएबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट। तो बस इतना, कुछ भी उससे रिलेटेड हल्का फुल्का बोल रहे हैं एक लाइन तो बोल दीजिए, वरना अदरवाइज सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉल, और I don't know the exact meaning of it, but I'd like to learn. So that's it. Yes sir. Okay. समझ गया सर, I got it. Okay. Thank you sir. Thanks. Okay. Bye. All the best. Thank you sir.